Namaskar and welcome to Source Astrology video number 41. How are we proceeding in these Source Astrology videos? मैं इस videos के द्वारा आपको step by step ज्योतिष के दुनिया में, ज्योतिष के different dimensions में, ज्योतिष के different आयाम में लेके जाना चाहता हूँ. बट कभी कभी क्या होता है, मेरे पास ना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आ जाते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सूत्रस, कुछ इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, एंड आई थिंक that's going to really value add in your life. That's really going to value add in your life. जैसे if you have seen me doing some videos of Dagda Rashi, मैंने क्यों किया आपके साथ वीडियो on Dagda Rashi? Because I realized that कभी कभी you are looking for a problem in life, जिसको अगर आप normally astrology में step by step सीखेंगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा वहां तक पहुंचने में. That's why I thought that I should first share you with those kind of things so that अगर आपके लाइफ के अंदर कोई भी इस तरह की कोई इश्यूज हो रही है, एनी इश्यूज इन योर हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंस, स्पिरिचुअल जर्नी, कैरियर, मनी, मैनिफेस्टेशन, तो आप एटलीस्ट इन प्रिंसिपल्स को, दग्धराशि प्रिंसिपल्स को एनालाइज करके देख सकते हैं. अगर कुछ अच्छा भी हो रही, वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑल दिस थिंग्स एंड देन आई हैड गिवन यू सर्टेन आउट ऑफ द वे थिंग्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ द दग्धराशि. इट इज नॉट अ स्टेप बाय स्टेप सिस्टम. मैं कभी कभी, मुझे जब कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिल जाते हैं, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी ऑफ अ वेरी गुड इंपॉर्टेंस टू आई ट्राई टू शेयर थिंग्स अबाउट. इवन आपने लास्ट वीडियो में देखा था, आई टॉक्ड अबाउट द अंडरस्टैंडिंग, अनलॉकिंग द सीक्रेट ऑफ वेनस, जुपिटर एंड मार्स, और यू कैन से जुपिटर, वेनस एंड मार्स. क्यों मैंने समझाया था? क्योंकि आप अगर इफ यू स्टार्ट सोल कम्युनिकेटिंग विद दिस प्लैनेट्स और देयर देवतास और देयर शक्तिज, यू मे गेट हेल्प, यू मे गेट अंडरस्टैंडिंग दैट आप क्या क्या कर सकते हो, मैनिफेस्टेशंस कैसे होता है. सो दैट्स व्हाई फ्रॉम टाइम टू टाइम, इवन इन दिस सीरीज, इवन इफ आई एम टेकिंग यू फ्रॉम स्टेप टू स्टेप, मैं कुछ ऐसे सूत्र दूंगा जो शायद इन बिटवीन आपको मदद कर दे. You may be at any stage of astrology, numerology, or any particular level. हो सकता है आप एंथुजियास्ट हो, बट अगर आपको ये सारे प्रिंसिपल्स मिल जाए पहले ही सही, तो शायद आपको आपकी प्रेडिक्शंस में, आपको अपने बारे में समझने में ज्यादा मदद होगा. दैट्स द रीजन from time to time I'm going to give you certain things, certain tools, certain secrets, certain sutras, certain principles, certain laws, और मैं चाहूंगा कि आप इन चीजों को देखना शुरू करें अपने चार्ट के अंदर. So today I'm going to share one such thing about शनि, Saturn. शनि के कुछ एक ऐसे सूत्र हैं जो मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि कभी, बिकॉज मेरे पास एक केस आया था जिसमें जातक was unable to understand many things, comprehend many things, and the जातक का life was actually falling down, and it was a very different kind of case. He was not able to even understand what I am to tell him. He was not able to understand because he was hopping from one astrologer to astrologer. कभी कभी होता है, आप देखोगे आपके पास आया, आप पूछोगे आप मेरे पास क्यों आए हो, सो वो बोलेगा नहीं मैं इतने एस्ट्रोलॉजर्स के पास गया था, आई डिडंट फील सेटिस्फाइड, और ये भी चांस है कि वो आपसे भी सेटिस्फाइड नहीं होगा. सो देन यू मस्ट गो इनटू डीपर. So that's why I was trying to look into, and I suddenly realized, let me also look into this angle, and I realized some uh, astonishing some rule inside which actually said yes, this is quite possible. So that's why today I'm going to share certain things, certain rule, and it is called as the Saturn's shadow or chaya of Saturn. So let's try to understand what is this Saturn's shadow and how it works. So what I want from you is that whatever sutras, whatever thing you're trying to understand from here in this video, प्लीज प्रैक्टिस इट. बिकॉज मैं जिस तरह का एस्ट्रोलॉजी करना चाहता हूँ, या मैं जिस तरह के एस्ट्रोलॉजी को वांट टू शेयर, आई रियली डू नॉट वांट टू जस्ट लिसन टू इट एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट इट. बट सबसे बेहतरीन होगा अगर हम इन चीजों को सीखें, एक ही चीज सही, एक ही प्रिंसिपल सही, बट उस प्रिंसिपल को आप डिफरेंट चार्ट में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए. Take an example of your chart. Take an example of your family member's chart. Take an example of one of your friends' charts. Take examples from the right charts from the internet and apply it to them and see if you know about that person, and if you can apply that thing to the person, I think that will be much more better. So what is today's topic? Today's topic is about Chaya of Saturn. It is really a very important topic and I want you to give a complete attention. Maybe I hope you are ready with your diary, pen and paper. मैं हमेशा बोलता हूँ आप एक पेन एंड पेपर को लेके ये देखिए, और यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट और स्नैपशॉट, व्हाटएवर इट इज. So let me tell you about the Chaya of Saturn क्या है. Let me just share my screen. So
Yeah, here it is. So Saturn shadow or छाया of Saturn. So what is happening? जहां पे भी चार्ट के अंदर, आपके कुंडली चार्ट के अंदर, आपके जन्म के चार्ट और किसी भी जातक के चार्ट के अंदर, जहां पे भी सैटर्न प्लेस है, जहां पे भी सैटर्न प्लेस है, वहां से आप फिफ्थ को देखिए, वहां से पांचवें स्थान को, उसको फर्स्ट मान के वहां से पांचवें स्थान को देखिए. सो व्हाट विल हैपन ओवर वहां पे पांचवें स्थान में, जहां पे भी सैटर्न बैठा है वहां पे पांचवें स्थान में क्या होगा? सो वहां पे ये पांचों चीजं में से एक चीज हो सकती है. यहाँ पांचों चीजों में उस जगह पे आइदर जातक को कोई स्प्लिट महसूस हुआ होगा. ये पांचों चीज ही हो सकती है, इसमें से दो हो सकता है, इसमें से एक हो सकता है, बट कुछ ना कुछ इसमें से होगा जातक के जीवन के अंदर. एंड दैट बिकॉज इट इज काइंड ऑफ अ, it's a kind of a play of light, if you can say, some kind of a play of light. So it's falling wherever Saturn is seen. वहां से फिफ्थ हाउस में आप देखिए, वहां पे जातक हुई, आप अपने चार्ट में ऑब्जर्व कीजिए, देयर में बी ए स्प्लिट एंड और देयर में बी अ काइंड ऑफ स्टेप ट्रीटमेंट, सौतेला ट्रीटमेंट हुआ होगा उस एरिया में. आपको उस तरह की वैल्यू नहीं मिली होगी जिस तरह की वैल्यू आप चाहते थे उस एरिया में, उस हाउस के अंदर. जो भाव वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस एरिया में, कौन सा भाव है वो अपनी चार्ट में रिप्रेजेंट कीजिए, या आपको वहां पे मल्टीप्लिसिटी होगी. अगर सैटर्न का कंडीशन अच्छा है, वो भाव अच्छा है, वहां पे चीजें शायद अच्छी हो सकती है, ज्यादा बढ़ सकता है. अगर गलत हो, गलत चीजें बढ़ेगी उस जगह के अंदर, द गलत चीजें विल increase in that place. Have a look at in your chart, have a look at an example of somebody else's chart, एंड देन वहां पे क्या हो सकता है? सेपरेशन हो सकता है. आप बिछड़ सकते हो जिंदगी, कोई एक पर्टिकुलर चीज से, आप उस एरिया में कोई एक पर्टिकुलर रिलेटिव जो उसको मेंशन कर रहे हैं. यस, स्लोली एंड स्टेडली वी आर गोइंग टू टेक एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सारे भाव के अंदर किस कौन कौन से रिलेटिव्स रिप्रेजेंट किया जाता है. बट मैं थोड़ा सा इसको पहले आपको बता देता हूँ. फिफ्थ हाउस फ्रॉम वेयर सैटर्न इज सिटिंग, सैटर्न जहां पे बैठे वहां से फिफ्थ भाव के अंदर आपको ये सारे एरियाज में आप कर सकते हैं. वहां पे आप कोई एक रिलेटिव जो उस हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां से आप सेपरेशन हो सकता है आपके लाइफ के अंदर, और उस एरिया में, उस भाव के अंदर कोई चीटिंग हो सकता है आपके लाइफ के अंदर. दैट इज द, सो दीज फाइव थिंग्स कैन हैपन विथ यू. ऑब्जर्व योर चार्ट वेरी वेरी केयरफुली and observe the chart. So I'll just try to show you one chart, if I can just open it very quickly in front of you. And here we will find that this is a case of a person जिसके life में अचानक से there was a kind of a fall down which took place in his life, and there's a kind of a fall down which took place in his life. So we were trying to find out why this fall down took place. I will just quickly share this chart with you guys. I'm going to share the chart with you. So if you can see this chart here. So what's going to happen? This is chart of one of the person. He came to me and there was some kind of a big, like he was in a very high position in life, and suddenly he lost a job and he had to do a kind of a low level job, so a strenuous job. And one of the thing I checked in this chart is I checked the fifth house from this Saturn. Though Saturn is a retrograde, so जब भी retrogression आती है, so it actually shows house from a different angle. We will talk about that in later house. But यहाँ से अगर हम position of the Saturn देखें, now fifth house from the Saturn is his karma क्षेत्र. So this guy faced a lot of trouble. This guy faced a lot of trouble in the karma kshetra, and finally he was doing an excellent job, which was a high quality job, and this person had to lose the job and again came down in a menial job, a kind of leveraged job, and which in which he had to spend his like midnight oils, and also that kind of thing happened in his life. So this is the area which you can apply. I can see that why, because he also got, somehow he said that he got cheated in this area. So one of the things, and even in our classes we teach every time, every Thursday we have got our case study classes. Actually, I presented in one of my Thursday case study classes, and I found I showed it to my students, and even some of them applied. One of them in fact applied instantly, and they also got a result instantly of this. So I really want you to please learn. If you have learned, if you've understood this sutras, if you've written those, if you have not written down this sutra, immediately pause this button and just go back, pause the screen of the thing. So just write it down, what could have gone wrong, and just in the comment just mention below that if this is somehow coming true in your life or not, because this is a very important thing. Suppose you're a professional astrologer, or you're trying to help somebody in astrology. Now this sutra is very very important, like everything, like yogi, avyogi,
all these things like Dagd Rashi. This is also another sutra that you should definitely not miss. The Chaya of the Saturn. Saturn जिस घर में बैठे हैं, कौन से घर में वो छाया गिर रहा है, उस एरिया में ये सारे पांचों चीजें हो सकती है जातक के साथ. एंड यू शुड बी वन शुड बी केयरफुल ऑन दैट एस्पेक्ट ऑफ द हाउस. एंड बिकॉज ज्योतिष का मतलब है लाइट ऑफ गॉड. जो भी सूत्र, उससे आपको क्या पता चल रहा है जिंदगी भर में क्या आपके साथ हो सकता है. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू इन अनदर वीडियो जिसमें आपको और एक चीज बताऊंगा. A very, very important thing. You should not miss that thing. And because that is the area, आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा. बिकॉज आप कभी कभी समझ ही नहीं पाओगे आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है. एंड ये वाला सीक्रेट जब आप समझ जाओगे, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ, सो आपको रियलाइज होगा आपको क्या करना चाहिए उस जगह के अंदर. सो see you in the next video, another secret, another principle which I'm going to share you. And please do not miss that video. May the source bless you beyond comprehension. Thank you for watching this video. See you. Take care. Bye bye.